ओके नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने जदि ऑडियो वीडियो सब किसी क्लियर अच्छी तो समझते यस कह दियो ओके तेरे हमरो अपकमिंग एग्जाम्स LTR आर्ट्स SSB TGT जूनियर टीचर OTT एवं OSSTT ता सहित अपकमिंग एग्जाम आपनकर RI AMIN मेंस एग्जाम एवं ओडिशा पुलिस कनेस्टेबल पई आमे आरंभ कर जाउछंदी लाइव मॉक टेस्ट 9 जहाँकि बेस करी रहिबा आपन मनकर स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स ऊपर हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स ओके बहुत बढ़िया समस्त बहुत बहुत धन्यवाद पिला माने ओके तेरे आजिर सेशन रो प्रथम प्रश्न रही कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स डू नॉट बिलोंग टू द ऋग्वेदिक पीरियड ठीक अच्छे गोटे सेकेंड पिला माने यस does not okay नमस्कार नमस्कार मान्यवर राकेश धन ओके ओके बहुत बढ़िया अरे इंद्र नहीं रे एटी अच्छी नॉट डज नॉट बिलोंग नॉट लगी माने मु सब कही इज नॉट वाज नॉट ओके डज नॉट ये सब क्वेश्चन को ट्वाइस पढ़िबो एटी से माने मरुतों को पूजा करुले इंद्र को पूजा करुले अदिति की पूजा करते पूजा करनुले क्या ना शिवं को ठीक अच्छे सो से समय से माने हमें कही परिबा इंद्र वरुण मित्र नसत्य सो से माने ए देवता मान को पूजा करुले फोर वैदिक गॉडेस ठीक अच्छे तो अनप्रूफ सेंट्रल एशियन थ्योरी ओके एंड दिस इज बोगोजोखाई शिलालेख इनस्क्रिप्शन जहाँ हमको प्रूफ दिए which part of Rigved considered to be written in the latter Vedic age yes कौन है सटीक आंसर यार पिला माने समस्त सेशन को लाइक कर दियो और सांग मान सहित गोटे शेयर मध्य कर दियो रे ओके केते मेसेज देवी पिला मान को थकी गले हो ठीक अच्छे so the answer is कौन है आंसर सर 10th मंडल ठीक अच्छे फर्स्ट एंड 10th मंडल were written in the latter Vedic age and second and 9th mandal or books were written in the early Vedic era. The Vedic era is considered to be 1500 BC to 600 BC ठीक अच्छे सो आमे समझ जानी कि आमर वैदिक एज ओके वेद अन्य नाम हूँ नॉलेज ज्ञान बा श्रुति आम काली पढ़ी ठीक अच्छे सो बर्तमान देखिए परवर्ती प्रश्न द वर्ड आर्यन डिनोट्स कौन अच्छी आंसर यार अरे मान्यव राकेश आज जेहेतु देह टी असुस्थ अच्छी तो आज फ्रेश देखा नहीं नेक्स्ट क्लास देखा
एमती भी मो फेसटा माने कदर्य फेस ठीक अच्छे देखिले आपण मैंने डिमोटिवेट हो तो यस एलिजा नमस्कार जब बहुत दिन पर आज एलिजा क्लास कर बहुत बढ़िया प्रयास को कंटिन्यू कर भल लगे 103 पिला माने सठिक आंसर हम डी एरेस सत्यमेव जयते वाज टेकन फ्रॉम व्हिच बुक ए क्वेश्चन टाको समस्त को दिया होमवर्क केवल जड़े मात्र देछन्ती सठिक आंसर ठीक अच्छे मिस्टर हिमांशु शेखर समथिंग जड़े किए कमेंट देछन्ती ठीक अच्छे बहुत बढ़िया तेबे कौन हम ये सठिक आंसर पिला माने 104 पिला माने सठिक आंसर होचंदी सी ओके मुंडक उपनिषद रु अणा है कौन रे सत्यमेव जयते ओके बहुत बढ़िया द नेम ऑफ आवर मदरलैंड भारत was first mentioned in dash पिला माने हमें दी सेशन रे हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी करंट अफेयर्स सब किसी क्वेश्चन मिक्स अच्छी यस कृष्णचंद्र डोरा नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन ओके सो 105 पिला माने कौन हो आंसर द नेम ऑफ आवर मदरलैंड भारत फर्स्ट कोड इतला मेंशन रे अरे विष्णु पुराण ठीक अच्छे विष्णु पुराण फास्ट आमर इटा मेंशन होता ओके पढ़ा आर्टिकल 1 कौन कौच रे इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states so भारत where the Vedic tribe mentioned in Rigveda also mentioned है the name Bharat was used for a group of people who live in northwest and who are mentioned in the Rigveda, the earliest composition in Sanskrit, later it used to the country. So I mean जानिए Vedic period. So during Vedic period and पिलामाने समस्ते मध्य हमें अगर पढ़ी about Aryan inventions theory. Okay, so the Bharat is the Vedic tribe mentioned in Rigveda. ठीक अच्छे बहुत गुड़िया आम आमर एपिक आम मध्य कहूची ता सहित आम संविधान कौन कहूची हम ताकू मध्य आज बुझीबा which metal was first used by the Vedic people कौन होगा सटीक आंसर अरे एटी प्रश्न अच्छे कि व्हिच मेटल वाज यूज्ड बाय द वैदिक पीपल सो वेद सभ्यतारे से माने केवल कपर व्यवहार जानी एंड आमे कहि परिबा गोटे प्रश्न मध्य आसे कि व्हिच मेटल वाज अननोन फॉर आईवीसी पीपल आईवीसी पीपल मानक पई आयरन वाज अननोन ठीक अछि परवर्ती प्रश्न संगम एज इज एसोसिएटेड विथ द हिस्ट्री ऑफ डैश ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 107 पिला माने संगम एज आमर ये केउ जगह सहित एसोसिएट रे अरे बनारस नुहे इलाहाबाद नुहे तमिलनाडु होची सठिक आंसर खजुराहो भी नुहे तमिलनाडु संगम डायनेस्ट आम समस्ते पढ़ी साउथ इंडिया रो जो राजधानी थिले चोल पांड्या राष्ट्रकूट सब मन पड़ी कि नहीं ओके सो अबाउट संगम एज ओके पीरियड देखिबा जे 300 बीसी रु 300 सी पर्यंत तमिलनाडु राम थिला ठीक अछि संगम एज आल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ तमिल लिटरेचर ठीक अछि so these are the facts please go through it the Sangam age was marked by the establishment of 3 literary gathering called Sangam by Pandyan kings ठीक अछि so the Sangam age also ruled by 3 Tamil dynasties
पांड्या चोला एंड चेरा जस्ट कहते बर्तमान अच्छा अच्छा राकेश बफरिंग होची ओके ओके सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट महाजन पद पिला माने हमर 16 टी अछि महाजन पद ठीक है 16 महाजन पद बा 1600 महाजन पद हमर कहि परिबा हमर अंग मगध काशी वश्य कोशल सुरेशना पंचाल कुरु मत्स्य चेदी अवंती गांधार कंबोज अस्माक भजी and malla so these are the capital list please go through it and the modern cities केबे के पिला मन पचारि दिए कि पुरुर वर्तमान नूतन ना मॉडर्न ना कौन कि पचार देबो कि मगध और वर्तमान र प्रेजेंट नेम कौन तो आमे जदि न जानी यार आंसर दे पारिबा नहीं ठीक अच्छे तेबे आमे कहि परिबा सपोज लेट एग्जांपल मगध मगध रो से समय कैपिटल थिला कोन रे गिरी ब्रज और राजगिरी सो द प्रेजेंट नेम इज गया एंड पटना सो दीज आर द मॉडर्न नेम्स प्लीज जस्ट ट्राई टू read it twice and thrice so it will help you a lot right. So moving to the next question, which ruler was contemporary of both Buddha and Mahavir? So Buddha and Mahavir contemporary king ruler के थिले रे? So पिलामने you might have heard about the name Bimbisar. My friend, I have used the word Bimbisar, not Bindusar. So Bindusar, he was the father of king Samrat Ashoka, ruler Ashoka. But here I said Bindusar, sorry Bimbisar. Bimbisar जन अलग राजा, Bindusar जन अलग राजा. Bindusar जन से Mauryan वंशर थिले second ruler. ठीक अछि. So which Magadha ruler was known as Senio? Senio कहा कुआ जाए रे? Yes, जुल्फिकर एलिजा मान्यवर बहुत बढ़िया बाकी पिला माने सब कुआडे गले कौन मेरा आंसर अरे सी हव आंसर अगेन बिंबिसार ओके मगध रूलर नोन एज सेनियर देखो एटी गोटे मेंशन करछि अजातशत्रु ठीक अछि तो तांकर 492 रो 460 बीसी पर्यंत बा अर्ली 5th सेंचुरी बीसी रे तांकर किंग ऑफ हरण्यक डायनेस्टी ओके ऑफ मगध इन ईस्ट इंडिया एंड ही वाज द सन ऑफ किंग बिंबिसार तो अजातशत्रु कौन थिले रे सन ऑफ किंग बिंबिसार एंड वाज कंटेम्पोररी ऑफ बोथ महावीर एंड गौतम बुद्ध मैंने कंटेम्पोररी मीनिंग कौन रे समसामयिक ठीक अच्छे सो बर्तमान देखिए परवर्ती प्रश्न हु एमंग द फॉलोइंग ट्रांसफर्ड हिज रॉयल रेसिडेंस परमानेंटली फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र एमानक मध्य किए थिले से व्यक्ति बा से हमर राजा थिले बा रूलर थिले जे तांकर तांको जो कैपिटल को ठीक अच्छे परमानेंटली से ट्रांसफर करते रेसिडेंस को सॉरी पिला माने रॉयल रेसिडेंस राज जो हमर राजगृह रही ठीक अच्छे तेरे हमें कौन हो सटीक आंसर अरे उदयन ठीक अच्छे ये कौन कले रे परमानेंटली राजगृह रु पाटलिपुत्र रेसिडेंट को से शिफ्ट करथिले बा ट्रांसफर करथिले अलेक्जेंडर फॉट अगेंस्ट द पोरोस ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश बहुत सहज प्रश्न दिए पिला आशा करी समस्ते प्रश्न सठिक आंसर कमेंट बॉक्स लिखिया पाई यस so the
आंसर इज झेलम झेलम नदी कूल आलेक्जेंडर एंड पोरुंकर लड़ाई होता एवं आमर राजा लड़ाई करता ना हूँ अंबी राजा एंड ड्यूरिंग दैट वार आम कह कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइडेस्पस वार ओके द बैटल ऑफ झेलम ओके नोन एज बैटल ऑफ झेलम सो पिला माने कंफ्यूज हबो नहीं जितेबाला आलेक्जेंडर आसिले टू कनक्यूर इंडिया सो फर्स्ट अंबी आमर जो थे राजा से कंप्लीटली सरेंडर करदे ओके टू आलेक्जेंडर से माने मु पारिबी ना अपन लड़ाई करिया पे बट पोरू एंड ही वाज फॉट विथ आलेक्जेंडर ओके विथ करेजियसली तो बट माने से पोरू डिफीटेड but Alexander was so much impressed on Porus due to his war skill, right? So that was all about the Battle of Jhelum. And next question. Yes, मान्यवर आमे निहाती ओडिशा हिस्ट्री कौन एक्जाक्टली चैप्टर को जे ओडिशा रो हिस्ट्री जीके चाहूच ना ओडिशा हिस्ट्री पार्ट वाइज चाहूच लाइक आमर जो थिले रूलर्स माने तांको ऊपर चाहूच ना केमती क्वेश्चन चाहूच केमती सेशन चाहूच प्लीज मेंशन यस राकेश with which of the following centers of learning Chanakya the famous teacher Chandragupta Maurya was associated प्रश्नटी भलरे बुझीबार आमे with which of the following centers learning जे केउ एमान तो केउ लर्निंग सेंटर रे चाणक्य was famous teacher कहार चंद्रगुप्त मौर्यंकर से माने एसोसिएटेड थिले रे टीचर भाबरे तक्षशिला नालंदा ना कौन हो आंसर हाँ yes of course तक्षशिला तक्षशिला ए प्लेस टी बहुत गुरुत्वपूर्ण स्थान आमे ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर बा हमर जेतले मौर्य साम्राज्य समय रे आमे कहि परिबा कि तक्षशिला जो जगह थिला जोटी हम जाइतले कि हमर सम्राट अशोक जाइतले कोन माने रिवोल्ट को सप्रेस करिया पई ओके सो जो जगह कि हमर चंद्रगुप्त हमर चाणक्य मेट विथ चंद्रगुप्त जेतबेले हमर राजा बा किंग चंद्रगुप्त मौर्य छोटो थिले तो चंद्रगुप्त मौर्य को सहित चाणक्य प्रथम भेट कोठी थिला ना एई तक्षशिला रे हेतिला ठीक अछि सो चाणक्य द टीचर चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड विथ तक्षशिला a famous center of learning in ancient time तक्षशिला now in located in Pakistan तो present day in Pakistan ठीक अछि Chandragupta Maurya defeated of dash अच्छा ओके राकेश got it sure हमें लाइक हमें एंसेंट ओडिशा हिस्ट्री में नहीं आसीबा ठीक अछि सो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड ऑफ अरे शिलकस ठीक अछि शिलकस निकोटर जन राजा से आमर कहार थिले कहले पिला माने आमर आलेक्जेंडर थिले से गवर्नर थिले एक्चुअली ठीक अछि तो तांको सहित लड़ी हेतिला ओके देखो चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड शिलकस निकोटर इन द सेल्यूसिड मौर्यन वार ओके सो कहा जाए कि ये जो सेलेकस निकटरम को से लड़ाई रे हरेबा परे कहले रे ना से गोटे प्रस्ताव रखिथिले जे ए लड़ाई रे हारिला परे सेलिकस निकटरम को हमर चंद्रगुप्त मौर्य
ठीक अच्छे 500 हाथी ओके माने एलिफेंट से गिफ्ट करथिले रे एवं ताहा सहित पिला माने से कोन करथिले ना चंद्रगुप्त मौर्य ए सेलिकस निकटरंग झियो थिले हेलेन तांको से विवाह करथिले काहंको ना सेलिकस निकटरंगर झियोंको ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न हु वाज मेगास्थनीस मेगास्थनीस के थिले रे अरे ए ग्रीक पिलग्रिम ठीक अच्छे आउ ए मेगास्थनीस लिखिले गोटे पुस्तक ता ना होची इंडिका जो थे कि से चंद्रगुप्त मौर्य बा मौर्य शासन समय इंडिया रो अवस्था को मध्य से वर्णना करथिले रे ठीक अच्छे The decline of Nandas at hands of Kautilya and Chandragupta Maurya has been vividly portrayed in Sanskrit play. ता नाम कौन अच्छा जो लड़ाई रे कि आमर जड़े थिले राजा नंद वंशर शेष राजा किए ना धनानंद ए धनानंद को आम कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य हरैथिले लड़ाई रे तो तांको ऊपर गोटे संस्कृत प्ले अच्छी नाटकटी अच्छी ता नाटा कौन ता नाटा हूँ आमर कौन रे मुद्रा राक्षस भाई किए लिखिले को विशाखा दत्त लिखिले कौन ना मुद्रा राक्षस ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय डैश चंद्रगुप्त मौर्य पर किए शासन करथिले रे सर मु कहली देख प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य इन द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्ट 2 नंबर आइले किए से आइले होची बिंदुसार आइले 2 नंबर सो ये 2 नंबर अशोक आइले पिला माने 3 नंबर ठीक अच्छे तेरे एठी कौन हम आंसर चंद्रगुप्त मौर्य पर राजगादी रे किए बसी ऐसा बिंदुसार ठीक अच्छे आ बिंदुसार आउ गोटे ना अच्छी अमित्र घात ओके तेरे ए बिंदुसार कहा जाए but it is said that it might be a hypothetical story for you guys but believe me historian says कि बिंदुसार जन्म बड़ रहस्य थिला तांको ना काहे किला बिंदुसार मु मध्य समस्त पढ़े थिली ड्यूरिंग माय लेक्चर इन एंशिएंट हिस्ट्री मौर्यन एम्पायर ओके तो मु कौन कही कि बिंदु बिंदु छेली रक्त मथारे पड़ूला से ना रखा होची बिंदुसार मु एग्जैक्ट या स्टोरी आपने पाई परिबे मो हिस्ट्री लेक्चर रे प्लेलिस्ट रे देखि परिबे क्लियर okay so moving to the next question who was known as अमित्र घाट एबे मु जस्ट कहिली ओके आ गोटे क्वेश्चन बेला पचार दिए हमरो सिविल सर्विस एग्जाम रे पचार दिए ओके who was referred as Antriochet and who was referred as Androcota and Sandrocotas okay please don't be confused in this terminology okay so हमें समूह जानि को पड़िबो रे जो जानि न please pay attention yes संतोषी नमस्कार वेलकम टू द सेशन पिला माने कोन हम समस्त सेशन को लाइक करिबा आ हम संग मन सहित गोटे शेयर करिबा यस बहुत बढ़िया देखो सो मेरी कहि परिबा अमित्रघात की पिला हम कहली रे ना बिंदुसार ओके नॉट बिंबिसार बिंदुसार ठीक अच्छे सो एंड एंको मध्य द्वीप वंश रे कहा जायछि जे एंट्रियोचेट एंड मौर्यन वंशर जो फाउंडर थिले चंद्रगुप्त मौर्य कौन कहा जाए ना सैंड्रोकोटा एंड एंड्रोकोटा बोली कहा जाए ओके सो द मौर्यन रूलर हु यूज्ड द नेम प्रियदर्शी इन हिज ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वाज प्रियदर्शी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियदर्शी means beloved of all gods ठीक अच्छे सो भाई भगवान प्रिय
प्रियदर्शी ठीक अच्छे किए अरे अशोका द ग्रेट ठीक अच्छे ये कौन है पिला माने ना चंडाशोकरु धर्माशोक होइतिले और एंकर ना माने ही अज्यूम्ड द टाइटल प्रियदर्शी ओके सो समटाइम्स हमको एग्जाम रे एक बड़ा क्वेश्चन ऐसे थाए ओके बहुत बढ़िया द रिवर महानदी does not flow through which of the following district in Odisha the river Mahanadi does not ଲାଗିଛି ରେ flow through which of the following district in Odisha कौन है आंसर अरे डी हवा आंसर जाजपुर ओके जाजपुर ठीक है देखिए वर्तमान कौन फैक्ट कहूँ द महानदी ताले को जगह रे फ्लो करिछि सा महानदी रिवर फ्लो करुछि सेवराल डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा हमर बौद्ध रे अनुगुल रे कटक रे ओके हाउएवर इट डज नॉट फ्लो थ्रू जाजपुर डिस्ट्रिक्ट महानदी रे जाजपुर नहीं रे डायरेक्टली इंस्टेड इट distributaries such as Virupa and the Brahmani influence in the Jajapur region. Okay, Virupa Brahman ta so influence हम कही परिबा ठीक अछि but not the main Mahanadi channel. महानदी रो एमन शाखा नदी जाइछन सियाड को but main महानदी जाई नहीं रे ठीक अछि यस अंकिता प्रणाम जय जगन्नाथ पिला माने क्लास को समस्त टिके लाइक कर दियो आई होप कि एवरीवन विल शेयर समस्त यदि गोटे गोटे शेयर करिवो बहुत भल लागिवो ओके अच्छा हुकीटोला फॉल्स लोकेटेड ऑन द रिवर पिला माने बढ़िया जगह हुकीटोला केबे के जाइछ कि नहीं यस सो इटा हुकीटोला फॉल्स लोकेटेड कोड अच्छी रे अरे पिला माने बी हबो सटीक आंसर महानदी ठीक अच्छी सो इटा वर्तमान जानिबा एक्चुअली इटा कोड अच्छी वर्तमान हुकीटोला इज सिचुएटेड ऑन जम्बू आइलैंड ये जो पिला माने आइलैंड देखो ना इटा अच्छी केंद्रापड़ा रे अच्छी केंद्रापड़ा जिला रे अच्छी रे हमर बे ऑफ बेंगल ऑफ महाकल्प ब्लॉक इन केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी आ ए जो देखुछ हुकीटोला ए छोट गोटे आइलैंड टी ए छोट आइलैंड भितरे ए गोटे ब्रिटिश माने बनेइथिबा गोटे छोट कंस्ट्रक्शन ओवर 150 years Odisha and Kendrapada hit by many natural calamities but ए जो बिल्डिंग टे रही यार किसी क्षति है ना आज पर्यंत ब्रिटिश मैंने जहाँ बन जाइछंती किसी क्षति हो ना ठीक अच्छे अच्छा यहाँ जो हुकीटोला पिला हुकीटोला ठीक अच्छे अच्छी कौटे गोटे आइलैंड टे ठीक अच्छे केंद्रापड़ा जिले जो मैंने अच्छ आमर बाबा मान्यवर हाँ यस केते बाट बाबा मान्यवर सेठू आपण घर जीवन पथ ए देह रथ द महानदी passes through the district of Dash yes Vivek right okay so आमे कहि परिबा एटी पिला मन देखो महानदी को जिला देख जाइछि रे भाई संबलपुर देख जाइछि सुवर्णपुर देख जाइछि केंद्रापड़ा आड़े भी जाइछि सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव पिला ने महानदी बाहरला कोटू सा छत्तीसगढ़ रो सिहावा पर्वतमाला रो बाहरला ठीक अछि सो प्रश्न आसीबो कि महानदी ओके ओडी हमर इंडिया रो केते नंबर स्थान रही रे सिक्स्थ लार्जेस्ट रिवर ठीक अच्छे आ या पर हमर हीराकुद डैम रही रे
Okay, the river Dio and Indrani are the principal tributaries of Dash. Very good. Ankita, Vivek, Rakesh, बाकी पिला मैंने सब कुआड़े गले अरे आंसर दियो भूल हो कौन असुविधा अच्छी सो द आंसर इज ए ठीक अच्छे बॉयफ्रेंड सठिक आंसर द ओरिजिन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एक्ट एज ए बाउंड्री बिटवीन द स्टेट ऑफ ओडिशा एंड झारखंड ओके सो ये प्रश्न अच्छे कि माने गोटे एमती नदी रही कि गोटे बाउंड्री भाई कम कर ओडिशा और झारखंड मझीरे गोटे बाउंड्री भाया कम करो नदी रे ओके सो द आंसर इज झारखंड बॉर्डर ओडिशा बॉर्डर अरे आमर बैतरण नदी बाहर कौटी रे केउंझर ओके केउंझर गोनासिका पर्वत रू बाहर बैतरण नदी ता साइड रे झारखंड रही काम कर ए बाउंड्री ठीक अच्छे बहुत बढ़िया देख ये मेंशन कर दी डिटेल्स रे गो थ्रू इट The total length drained by river Baitrani in Odisha. बहुत बढ़िया पिला माने विवेक मान्यवर शुभ्रा नारायण अंकिता नाइस अटेम्प्ट सो द आंसर इज सी पिला माने बॉयफ्रेंड रे हमरो 365 किलोमीटर अप्रोक्स रही ये ड्रेनेज लेंथ ठीक अच्छे मुझे जस्ट कहली कि बैतरण हूँ गोनासिका पर्वत रू बाहर एंड इट इज लोकेटेड इन केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट द इम्पोर्टेंट टाउन सिचुएटेड ऑन बैतरणी ओके इम्पोर्टेंट टाउन पचार ओके सो भद्रक तो नुहे बालेश्वर भी नुहे ढेंकानाल नुहे जाजपुर जो था जाजपुर जगह आनंदपुर सी होता सठिक आंसर ओके व्हिच वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ ओडिशा डज नॉट हैव डेल्टा इट्स माउथ प्लान व्हाट इज डेल्टा व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय डेल्टा ओके एटी प्लान प्रश्न नॉट लगी सो सब बेले कही जो क्वेश्चन आमर नॉट लगी प्लीज रीड इट ट्वाइस अच्छा अच्छा प्रसन्नजीत आसियो बाबा की पेशेंस ठीक अच्छे कर्म कर चल आम आमर छात्र हिसाब से पाठ पढ़ी चलवा जब एग्जाम आस एग्जाम दबा क्वालिफाई करवा सो द आंसर इज सी ऋषिकुल्या पिला माने गोटे बढ़िया प्रश्न आसे अबाउट ऋषिकुल्या अच्छा व्हिच एरिया इज नोन एज लिटिल सुंदरबन ऑफ ओडिशा आंसर दियो यस बहुत बढ़िया अंकिता देखो ऋषिकुल्या प्लेन ऋषिकुल्या जो आमर ठीक अच्छे इज ऑल्सो नोन एज लिटिल सुंदरबन ऑफ ओडिशा एंड सुंदरबन इज ए delta largest delta one of the largest delta in the world okay so आम कहते डेल्टा रे पिला माने कौन थाए ना हमर मैंग्रोव फॉरेस्ट थाए मैंग्रोव फॉरेस्ट पिला माने तर अधा से रहे पानी रे बुड़ी की ठीक अच्छे आउ अधा तार से पत्र एवं डाल सब रहे हमर कोडी ऊपर मध्य रही थाए ठीक अच्छे मैंग्रोव फॉरेस्ट रे हम देखिए पिला माने एटी कंकोड़ा आपनकर क्रोकोडाइल बा क्राब टर्टाइल्स एगुड़ा प्राणी देखा मिलती हैं सुंदरबन जो रहा आम एरिया सुंदरबन प्राणी सुंदरी बाघ था ओके बेंगल टाइगर्स
एवं आम कहीपर कि यार मध्य ओडिया रे कहते हेन्ताल बण ठीक अच्छे हेन्ताल बण एवं यार आउ ना अच्छी टाइडल फॉरेस्ट यार आउ ना अच्छी मैंग्रोव फॉरेस्ट क्लियर द कलिंग वार इज मेंशन्ड इन द डैश अरे मु कौन कहली अंकिता मु कहली ऋषिकुल्या प्लेन ऑफकोर्स एटा तो केन्द्रापड़ा ही तो रहिबो ना से एरियाटा ओके मु कहली कि व्हिच रिवर प्लेन इज कंसीडर्ड एज द लिटिल सुंदरबन ऑफ ओडिशा ऑफकोर्स केन्द्रापड़ा रे जाउची तो को मु एग्जैक्टली नदीर नांटे पचारची ऋषिकुल्या प्लेन Clear? Are you getting my points? Bolo yes. Okay, so the correct answer plan कौन हो ready? Sir, C have answer. 13th Rock Edict. ठीक अच्छी. So ଆମର କଳିଙ୍ଗ war କେବେ ହେଇଥିଲା ରେ? Sir 261 BC ରେ ହେଇଥିଲା. କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା. भुवनेश्वर अवस्थित दयानदी एवं दयानदी कूल कौन अच्छे धौली शांतिस्तूप अवस्थित धौली शांतिस्तूपर बाम पार्श्व देख गोटे एरिया अच्छे शिशुपालगढ़ आई समय आम कहार समय कैपिटल ना महामेघ वाहन ऐर खारबेल समय कैपिटल थिला कौन रे ना हूँ आमर शिशुपालगढ़ अच्छा पे गोटे प्रश्न आसब जे आमर खारबेल कृतित्व अचीवमेंट कौन लिखाई बर्तमान देखिए परवर्ती प्रश्न यस राकेश अंकिता विवेक फायरमैन एमएन रॉय अरे वाह बहुत बढ़िया एमएन रॉय वेलकम टू द सेशन ओके पिला माने मु गोटे छोट जिनस कहबी देख माने जदि सेशन भल लगुच प्लीज डू वन लाइक ये सब सार मैंने क्लास कर रिजनिंग इंग्लिश ओडिया ग्रामर मैथमेटिक्स कंप्यूटर तो सब्सक्राइब कर नियंतु और नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु ठीक अच्छे निहाती आपन को बहुत बढ़िया बढ़िया सब क्लास मिल जाव और जो मैंने टेलीग्राम में जॉइन करना प्लीज डू जॉइन इन द टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी आम लिंक रे दे सारीचु चैट बॉक्स रे एवं जो मैंने जॉइन करना व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य जॉइन करि परिबे मु सेशन लास्ट रे मध्य नंबर दे देबी जॉइन करिया पे सो बिला माने हमर या पर और ज्योग्राफी क्वेश्चन अछि और पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन मध्य रहिछि रे प्लीज बी पेशेंस रखो which of the following sources states that Srinagar was built by Ashoka by Srinagar amara present day kon re UT means union territories pila mane we have 8 UTs and we have 28 states in India ठीक अछि सो एटी प्रश्न रही कि श्रीनगर कह जाए कि अशोका निर्माण करते क्यों शास्त्र कहूँ सोर्स कौन कहूँ रे सो यार सोर्स पे कौन हम रे सर राज तरंगिणी कहूँ राज तरंगिणी ठीक अच्छे कल्हण कल्हण राज तरंगिणी बिंदुसार सेंट अशोका टू क्वेल द रिबेलियन इन डैश okay so pilamane do you remember during my ancient history lectures I have already discussed okay about Bindusar and Ashoka why mane Bindusar sent Ashoka to suppress the rebellion in the Takshila region एटा मु कहबे चाहूँगी कि जिते तक्षशिला गोटे रिभोल्ट चलता तो ये जो बिंदुसार पिला माने कह जाए कि 101 पुत्र थिले तांको भितर जन जने थिले पुत्र तांका ना होची फॉरगॉट हिज नेम एनीवे तांको पुओ नाटा भूली गोटे ना भूली जाय पिला माने तांको पुओ चाहूतिले कि अशोका राजा न हुंतु कहार ना मगधर से पाटलिपुत्र राजा न हुंतु तो तांको जगह रे
बिंदुसार जड़े आउ जड़े पुओ सी चाहूले राजा हाँपाई तो बापा जाए कहले बापा अशोका तो जड़े भल रूलर आप गोटे काम करूँ आपण कौन करूँ ना तथ्यशिला को पठे दिंतु से गोटे भूल चली आते अशोका गले से रिबेलियन को सप्रेस करने तो कौन है अशोक ना शुणिकी से रिबेलियन से विद्रोह से कंदल ऑटोमेटिक बंद हो गला जो जानवा को पाइले कि अशोका भाई माने एमती काम कर धोखा देती सो अशोक आसिले चंडाशोक हो गले समस्त मो भाई को हत्या करते ठीक अच्छे तो येस केवल जड़े भाई थे भिटाशोका छाड़ी और समस्त भाई को से हत्या करते बोली इतिहास कह जाए तेज ये कौन हम आंसर सो 129 आंसर तक्षशिला एंड प्रेजेंट डे अच्छी कौटी सर पाकिस्तान अच्छी ठीक अच्छे ओके अकॉर्डिंग टू द ओके छाड़ जस्ट गो थ्रू इट रीड कर दियो Who among the following was not a Greek ambassador staying at Mauryan court? Yes, मान्यवर इधर जल्दी गुड नाइट अरे पॉलिटिर बढ़िया बढ़िया आज क्वेश्चन अच्छी रे ठीक अच्छे आटलिस्ट तो 40टा 50टा पर्यटन क्वेश्चन अटेंड कर जल्दी थकी गले केमती हम रे मुझे जानी पे दिन सारा बिजी रोचंती से राति ही क्लास करुचु ठीक अच्छे तो कौन मेरा आंसर सर डी हो आंसर ठीक अच्छे इज वाज नॉट ए ग्रीक एम्बासेडर इथिले ग्रीक एम्बासेडर ये भी थिले मेगास्थनीस थिले गोटे क्वेश्चन पड़े मेगास्थनीस ओके क्यों पुस्तक रचना करथिले रे इंडिका ओके रोमन पिलर ऑफ अशोका इज पुट ऑफ टू मार्क बुद्धास डैश अरे बर्थ ठीक अच्छे जन्म देखिबा एटी कौन अशोका वाज erected mark the birthplace of Buddha. Pilar is located in Lumbini, Nepal. ठीक अच्छे Which of the following was not a regional headquarters in the Mauryan Empire? Yes, आरके बहुत बढ़िया अंकिता एमएन रॉय आरके निर्मल शुभ्रा राकेश विवेक ओके तेज आम कही पारे पिला माने क्वेश्चन नंबर 132 रो सठिक आंसर बी रे ओके तम बापरेनी इज नॉट वाज नॉट अच्छी ए नॉट लगे ना पिला माने क्वेश्चन को भूल कर दियंती ठीक है मौर्यन एम्पायर थिला तोषाली थिला उज्जैन थिला एंड तक्षशिला मध्य थिला टू whom was the Losma Rishi cave in the Bardar Hills near Goya donated by Ashok yes बहुत बढ़िया सो द आंसर इज प्लान कौन हम यार सर सी हम आंसर आजीविका मॉन्स ठीक है आजीविका इज ए सेक्ट लायन कैपिटल इन करेंसी नोट्स वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम डैश लायन कैपिटल in currency notes was discovered from अरे सारानाथ ठीक अच्छे आई जगह जो टी मोर महावीर गौतम बुद्ध
तंकर जो शिष्य मान को से फर्स्ट सरमन जो सारनाथ रे से कौन तंकर शिष्य जे मान को से प्रेस देथिले Which of the following statement is incorrect? एमान को मधुर incorrect कोटा yes संतोषी good निर्मल so हम गुट गुट पढ़िया क्वेश्चन को चंद्रगुप्त was known as Greek Amitrochets এটা Antriochets होबो ठीक अछि in the destroy of voice so आमे कहि परिबा 135 रो एटा टिके हमर सठिक रहउची एटी अछि इनकरेक्ट एटा सठिक अछि मु एबे कहितली कि हमर ग्रीक रो जो रहला को एंट्रियोचेट को जेना चंद्रगुप्त मौर्य को मध्य कुआ जाय सॉरी इनकरेक्ट एटा अछि रे इनकरेक्ट एटा ही इनकरेक्ट हबो एंट्रियोचेट का कुआ जाय रे एंट्रियोचेट कुआ जाय बिंदुसार को ठीक अच्छी बिंदुसार कुआ जाए एंट्रियोचेट चंद्रगुप्त मौर्य एटा फास्टरा भूल हेगला चंद्रगुप्त मौर्य इज said to have died slow starvation in South India it is correct कहीं कोई correct ना चंद्रगुप्त मौर्य he himself marked as starvation to death मीन्स से खाइलेनी पिलेनी कौन रे से साउथ इंडिया जगह अच्छी दैट इज इन कर्नाटका श्रावण बेलाबला सेठी से पड़े जाइथिले एंड फॉलोइंग द पाथ ऑफ जैनिज्म सो अगेन देखिबा सी कौटिल्य वाज चंद्रगुप्त's गाइड एंड मेंटर दैट इज करेक्ट चंद्रगुप्तଙ୍କର मेंटर थिले कि ना कौटिल्य मीन्स चाणक्य तर आउट ना अछि विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त was succeeded by his son Bindusar that is also correct so it a होची पिला नाम होची एटा भूल एटा होची incorrect so कोन को जाले तने what we say to चंद्रगुप्त मौर्य हुआ जाए कि सैंड्रोकोटा एंड एंड्रोकोटा बट क्वेश्चन दिला कोन एंट्रियोचेट्स पर एंट्रियोचेट्स कहा को जेना बिंदुसार को ता होची बिंदुसार preamble of the Indian constitution is borrowed from which country कौन हो आंसर प्रियम्बल आसीगला वर्तमान हमर इंडियन पॉलिटी एही नव जुग आनिबा सकाशे गांधी रही चंती सीना कारवासे तबे प्रियम्बल पिला माने कौन हो सठिक आंसर यार हो भूल हो आंसर देते रहो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस माने परफेक्ट करे ठीक अछि सो द आंसर इज ए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन आने वाला रे प्रियम्बल we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic etc छाड़ी दियो छाड़ जीवा नहीं the correct sequence of various destination values mentioned in the preamble of the constitution is dash correct sequence पचार चेटी पिला माने so this is very important yes एमएन रॉय अरे वाह क्या बात है ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन वेरी गुड बहुत बढ़िया एमएन रॉय एंड ही वाज वन ऑफ द एक्टिविस्ट एंड एमएन रॉय पिला माने in 1934 he gave the idea to make a constituent assembly in India. Okay, so he was a activist and a pioneer of Indian activist. Okay, so आमे कहबे कि से मध्य सपोर्टर ऑफ मार्क्सवाद एमएन रॉय सो पिला माने कोन कहतिला में हां सीक्वेंस कोन हो मते को वर्तमान भाई देख जीके जीएस पई आपनकर एलटीआर हो आपण मानकर ओएसएसटी एग्जाम हो ओटीईटी हो
ओनली वी आर ओनली वन चैनल जे कि जीके जीएस को विस्तार भाव में दौची प्रति विषय वाइज दौची। सो पिला माने वर्तमान देखिए आम पर ए क्वेश्चन आंसर कौन हम। अरे सी हम आंसर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस मीन्स न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भातृत्व भाव। देखिबा देख लिखाई जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू assuring the dignity of individual and to unit of the nation। ठीक अच्छे। So moving to the next question, how many types of liberty are mentioned in the preamble? मधुस्मिता गुड इवनिंग। हाँ से नमस्कार करो मुझे आशीर्वाद करुच्ची। ठीक अच्छे यूट्यूब ही आमर साहा भरोसा आमर माध्यम आशीर्वाद नबार आ प्रणाम स्वीकार करिवार। प्रणाम स्वीकार करो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी भाई आमर लिबर्टी अच्छे केते प्रकार 5 प्रकार। अब ये लिखाई भाई देख ओके लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशंस बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। ओके ये हूँ गोटे लिबर्टी भाई आमको कौन लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता बा स्वाधीनता। भाई आमे भाभी पारिबु आमे भाविबु जे आमे भारतर प्राइम मिनिस्टर कहीं किसी आमर उपाड़ी पारिबेनी। ठीक अच्छे मु भावी एक्सप्रेशन करी मो जा इच्छा तो एक्सप्रेशन करी मो बिलीव करी भाई मो इच्छा मोर विश्वास मोर पूजा मु पूजा करी यही भगवान को पूजा करी से भगवान को। तो मोर लिबर्टी रही तो के आमर लाइफ टू लिबर्टी कौन रे आमर संविधान को आर्टिकल जाऊँगी। समस्त आंसर दियो what 21 says। what is 21A article 21A right to education हमें पढ़ा आगामी क्वेश्चन नंबर रही। what is the legal nature of the preamble of the constitutions? अंकिता देखिले सर एते रेट रे अच्छा अच्छा कहया पर आपण गीत गाइबा को डरू नाहंती गुरु लाज। हाँ आगो लाज करथले आ एबे लाज करूने जदि कैमरा ऑन थांदा मु लाज करथांदी। ठीक अछि सेतले गुडे गाइ दोचे बेले बेले जस्ट समस्त एंटरटेनमेंट कर केते आमे रहिबा डिप्रेशन रे एग्जाम को नै कि चाकरी को नै कि। ठीक अछि तो पाठ पढ़ मजा मस्ती कर बेले बेले। So B is the correct answer. It is not forcible. The legal nature of the preamble मु आगुरी मध्य एको पढ़ी कही मध्य कि it is not justiciable or it is not enforceable. Clear? So देखो these are the cases बेदुबारी cases केशवानंद भारती cases and LIS of India cases. Please take a screenshot and read it. According to Article 1 of the Indian Constitutions, India is dash. What Article 1 says? कौन कोई Article 1? Sir, India, that is Bharat, shall be a union of states. Means, कौन हो आंसर? Sir, union of state is the correct answer. मतलब धारा 1 को समस्त शिक्षित भाବରେ ता गुरुत्वपूर्ण धारा। ठीक अच्छे यस आर के आर्टिकल 21 रे फ्री एंड अरे हे आर्टिकल 21 रे कौन कौच कंपलसरी आर के 21 और 21 है प्लीज एनश्योर ठीक लिखिछ
हाँ गाओ गाओ। अच्छा अंकित एटा एलटीआर पीरियड आसीतला अरे वाह जाओ चमत्कार गुड। सो आर्टिकल 1 कौन कौच रे इंडिया कमा सेटा ही भारत देखो ये लिखा है आर्टिकल 1 कौन कौच ना इंडिया सेटा ही भारत समस्त राज्य मानकर गोटे संघ बा केंद्र अटे ठीक अच्छे। सो आमे कही परिबा यस 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 अंकिता आरके गुड सेटा ही हम पचारथली टाइपिंग मिस्टेक आरके करले बट आंसर ठीक लिखिछ टिके मिस्टेक हो गला नो इश्यूज। Right to education we have many questions okay regarding on fundamental rights just our 2-3 मिनट पर क्वेश्चन आसी जीवो। सो व्हाट हमर आर्टिकल 1 कोन कहूची रे सर यूनियन ऑफ स्टेट्स कहूची ठीक अछि। इंडियन पार्लियामेंट has the power to create a new state please read it carefully। पार्लियामेंट चाहूँची गोटे नूतन राज्य को तैयारी करी बा कौन से राज्यर सीमा निर्धारण करी। सो व्हिच आर्टिकल इज दैट सर आर्टिकल 3 कौन कहूँ आर्टिकल 3 रे एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज देखिबा द पार्लियामेंट कौन रिप्लाई कोच रेडी देखो फॉर्म ऑफ ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी बाय पार्लियामेंट ओनली पार्लियामेंट पार्लियामेंट चाहे कौन करि परिबो भाई नुआ राज्य तैयारी करि परिबो कहार केउ राज्यर सीमा को मध्य से निर्धारण करि परिबो ठीक अच्छे से चाहिए कौन सी राज्यर सीमा को मध्य डिमिनिश करि परिबो हटै परिबो किंबा अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट कौन से राज्य से नाम को मध्य परिवर्तन करि परिबो दैट इज आर्टिकल 3 ओके। सो आर्टिकल 1 2 and 3 is very important clear। Indian citizenship cannot be obtained by dash एबे गोटे क्वेश्चन अच्छे सिटीजनशिप ऊपर देखिबा क्यों मान देबे सटीक आंसर ओके इंडियन सिटीजनशिप एटी कैन नॉट अछि मोर प्रिय पिला माने कैन नॉट जोर थिबो ठीक क्वेश्चन को भल से पढ़िबे रे स्नेहशीष जय हिंद मो भाई भौणी हे उत्कलवासी स्वराज्य साधने न हो दासी जे दीक्षारे थरे करिछि विश्वास न छाड़ी तातिबा जाएटी निश्वास स्वराज्य मानव जन्माधिकार ए भाविनी देश हुए छार खार। सो कौन हम यार सठिक आंसर पिला माने यार आंसर होछि रे डी हम रे एटी नॉट अछि भाई बाय बर्थ सिटीजनशिप मिले जीवो न्यूट्रलाइजेशन मिले जीवो एंड ऑफशोरिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड मध्य मिले जीवो बट कैन नॉट बी obtained that is depositing money in Indian banks okay the citizenship provided by the Constitution of India is dash कौन आम सिटीजनशिप कौन प्रोवाइड करछे as per आम संविधान अनुसार सर सिंगल सिटीजनशिप ओके आमर होची सिंगल सिटीजनशिप एबे सीए लागिवो अपेक्षा करो which of the following is component to prescribe condition of the acquisition of citizenship yes अंकिता आरके स्नेहाशीष संतोषी मधुस्मिता एमएन रॉय बहुत बढ़िया हरिचरण
yes RK dual. So 144 रो सटीक आंसर प्लान कौन हो रे डी हो आंसर दैट इज पार्लियामेंट ठीक अच्छे पार्लियामेंट से कंपोनेंट करिवो कौन रे कंडीशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कहा को नागरिकत्व मिलिबो कि नहीं पार्लियामेंट रेडी करिवो फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड inspiration from which countries constitutions आदि चली ग्लोबल अखंड भजन ग्लोबल अखंड भजन चली बट आज मो भजन न जाए कि आपण मानकर परीक्षा पई क्लास करूची एमती भी मत मो ना सिंगर ना कि जस्ट भल लगे भजन बसिया तबे कौन हम सठिक आंसर यार अरे पिला माने फंडामेंटल राइट्स आसिला कोठु रे सर यूएस रो आसिला कौन कहंती माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया ठीक अच्छे पार्ट को पार्ट लिखा रे पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 रू 35 क्लियर नहीं अंकिता एबे मु दिल्ली रे नहीं एबे मु भुवनेश्वर अछि फंडामेंटल राइट्स आर डैश जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बट आम संविधान पिला माने partially flexible and partially rigid and one of the lengthiest written constitution of the world. So what will be the answer? Fundamental rights amara कौन रे भाई ये कोर्ट रे विचार ही परिबो बट प्रेमबुल नुहे ओके प्रेमबुल एनफोर्सेबल नुहे बट जदि अपन फंडामेंटल राइट्स के क्षुण्ण कला तो कौन करिबे रे सीधा कोडी जिबे भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्ट ना जिबे जिला कोर्ट ना जिबे हाई कोर्ट सीधा जिबे कोर्ट की सर आम जिबा दिल्ली दिल्ली चलो सुप्रीम कोर्ट जिबा कहीं सार हमको एमती कहले कहीं ओके ए परीक्षा को बातिल करागला कहीं करप्शन है कहीं बारंबार परीक्षार तारीख को घुंचा जाउछि कहीं परीक्षा पोस्टपोन होउछि ए सब आपन कोन भाबुचंती आपन फंडामेंटल राइट्स हा 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 बिल्कुल नहीं originally how many fundamental rights are in our constitutions originally पचासे originally अच्छा ओके सो हमको एक्चुअली पिला माने ओरिजिनली हम थिला होची 7टी थिला फंडामेंटल राइट्स तो कहला राइट टू प्रॉपर्टी को उठे दिया गला ठीक अछि एबे राइट टू प्रॉपर्टी हो नाही तो वर्तमान हमर 6टी रहिछ हमर कोन रे ना फंडामेंटल राइट्स क्लियर देखो तो कौन कौन 6टा अछि सर हमर राइट टू इक्वालिटी right to freedom right against exploitation right freedom of religion cultural and educational rights and right to constitutional remedies एटा हो हमर आर्टिकल कोन रे कह आर्टिकल अब कहा को कहा जाए अच्छा क्यों आर्टिकल को कहा जाए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाए यस आर के
राइट टू प्रॉपर्टी को वर्तमान से माने 300 ओके राइट टू प्रॉपर्टी को वर्तमान से माने 300 अल्फा रे ऐड करछंती पिला माने समस्त बुझेइतिले आगुरु मु आम संविधान रो भाग केतुडा अछि रे सर 25 टी भाग अछि केतुडा अछि शेड्यूल सर 12 टी अछि सर आज ऑफ नाउ केतुडा अमेंडमेंट हेछि सर अमेंडमेंट हेछि हमरा होछि 106 टाइम्स ठीक अछि जेतबेले सब ऐड हुए नुआ नुआ आर्टिकल बट मूल हमरा ओरिजिनल जो रहला ओरिजिनल आर्टिकल 395 ठीक अछि अरे सॉरी गलानी रे अंकित सॉरी गलानी अल्प क्वेश्चन अछि बोधे क्वेश्चन तो सॉरी वन मो पाखरे ठीक और काम करबा हमें 8 एंड कर दबा ठीक है 50 एंड कर दबा ओके पिला मन हमें आज 150 क्वेश्चन करबा आउ 5 मिनट क्लास एंड कर दबा सो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 ରୁ 18 राइट टू फ्रीडम 19 ରୁ 22 राइट टू फ्रीडम रिलीजियन 25 ରୁ 28 सो प्लीज गो थ्रू इट prohibition of a discrimination on ground a direct question article 15 the कौन कहूची it's a fundamental right classifiable under dash এটা अपन previous question नहीं आके सल्ला आउ दीटा क्वेश्चन करबा ठीक अछि समस्त जो सबुदिन एमती अटेंड करन क्लास इच्छा कौन क्लास करने तो पिला माने आज आसले काली आसन समस्त मुझे नेक्स्ट क्लास करुचु जीके क्लास और बहुत गुरुत्वपूर्ण आ जो जो क्वेश्चन आसुची जो क्वेश्चन बछा बछा क्वेश्चन माने जेहेतु आप माने एग्जाम दौरान ये क्वेश्चन क्वालिटी और लेवल जानी पड़े ठीक अच्छे मुझे एग्जाम दौनी बट मु आज एनालिसिस कोची जेतु मु क्वेश्चन को एनालिसिस करूची तो आई नो द डेप्थ and the level of the questions how it will help you in the exams so कौन होगा आंसर सर क्वेश्चन नंबर यार होगा आंसर डी राइट टू इक्वालिटी आसुची देखो राइट टू इक्वालिटी कौन रे हम धारा आर्टिकल 14 गोटे अच्छी इटा हूँ 15 अच्छी ये कौन कहला देख ये सर आर्टिकल 14 ରୁ 18 ओके 14 ରୁ आर्टिकल 14 ରୁ 18 हूँ कौन रे राइट टू इक्वालिटी ठीक है भर 15 आसूची नहीं तो 15 कौन जीव रे सर राइट टू इक्वालिटी जीव क्लियर okay so in the Indian constitutions the right to equality is guaranteed of 5 articles there कौन हो इबे मु जस्ट कहतली सर सी हो आंसर 14 18 ठीक अछि राइट टू इक्वालिटी लास्ट क्वेश्चन which of the following does not fall within the purview of Article 21 of the Constitutions एटा पिला माने अपन मानक पाई आजिर होमवर्क मु जानि छी शीत राति ओके तेणुक समस्त निद लगे स्वाभाविक कथा खाद्य खाई सारा पर हम बॉडी रोटे केमिकल रिएक्शन हुए तेबे परीक्षा को माने पछर रखी आगे शोबाटा हूँ मूल कर्तव्य आम मानकर तेबे ए होमवर्क रे समस्ते ए क्वेश्चन आंसर देबे एवं आंसर देला बेले ब्रैकेट रे से मानक नेम को मध्य लिखिबे ओके आउ जो माने ए पर्यंत आमर टेलीग्राम रे जॉइन करिना हो टेलीग्राम रे जॉइन करिनियो लिंक दिया हिची एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य ऐड हे जाओ फ्री क्लासेस होची
फ्री रे सब किसी पाइबे रीजनिंग मैथमेटिक्स इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर कंप्यूटर जीके जीएस करंट अफेयर्स सब दिया जाउछि ठीक अछि हमर बहुत बढ़िया बढ़िया फैकल्टी माने ओडिसा रो वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज माने ए चैनल माध्यम रे आमे आपन मन को माने फ्री रे क्लासेस जोगे दोछु आशा करी कि समस्त को आज सेसन टी भल लगी आ जो मन को भल लगी जो भल लगी भी ना गोटे लाइक करदेव जो नुआ आज देखुच तो सब्सक्राइब करने को भूल ना पुणी आम देखा आ गोटे सेसन रे आम लाइव मॉक टेस्ट 10 देखा पुणी एमती आपण मन हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स विभिन्न विभिन्न इंपोर्टेंट एंड स्टैंडर्ड मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को लेकर पुणी आसवा आ गोटे सेसन रे तो से पर्यंत समस्त को धन्यवाद अरे पिला माने आंसर को दबरे कमेंट बॉक्स रे लिखिया को भूलिबो नै आ जो माने टेलीग्राम ज्वाइन करना प्लीज समस्त फटाफट ज्वाइन कर जाओ ओके स्नेहाशीष एमन रॉय मधुस्मिता संतोषी आरके समस्त बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फॉर योर सपोर्ट योर कोऑपरेशन मोटी सामान्य तांक अनुचर तुम गंज अति निशुन जय जगन्नाथ।